This is CBSE skill education, right? So this side is having all the chapters, all the MCQs plus question answers. So let's have the look. And before this, in the previous live stream, we have seen the NCRT, and I've told you some of the lines where you have to find the keywords which will help you to find the correct answer within the MCQ. So let's see this one. A dash is an organized collection of data, so it is database, and we have seen this over here in the NCERT. So that's why I'm saying that NCERT, you need to go through it very uh, a lot of number of time. See this one again, right? The same one. Okay, then let's move here. Now data can be organized into flat file and relational. We have seen both of them were there. Okay, this is the 10th question. So we can save the data in the flat file. So flat file means a single file, and relational means there are 2 or 3 files which are related with each other. So we can store the data in both of them. There is no problem in that. Then data is stored in a single file. 11th question is flat file, right? Okay, so let's see the second question. A dash is a software packet that can be used for creating and managing database. So that is database management system, DBMS. All right. It's not managed system. Then a dash database management system is referred to the relational model. Now when it is relational, you have to take RDBMS. Okay. Then we have fourth question, example of database, MS Access, Open Office Base, MySQL, all of the above. They all were the example of database. So all of them. Okay, we have seen this as well. See, MS Access, Open Office Base, MySQL, they all are the database. Then the database concept has been evolved in 1960. Let me see if I'm, yeah, 1960. Then DBMS stand for Database Management System. The database management system is a software packet with computer program that controls the creation, maintenance, and use of database, all of them. So with DBMS, you can create, you can maintain, you can use the database. A database is an integrated collection of data records, files, objects, all of them. They all are there in the database. DBMS enables several users application program to access the dash database. So same database, as DBMS allows several users to access the same database. So you write same database, not others or both A and B. Okay. Data can be organized into flat file and relational, both. We have done this. Data stored in a single file is flat file. Data stored in multiple tables which are connected together with a common field, that is relational. Okay. Related with each other, connected, related. So you need to find these keywords. Dash are dedicated computer that hold actual database and run only by DBMS and related software. They are database software. They are not decided software or dedicated software of web servers. They are database servers because database is there and they are managed by DBMS system. What are the advantages of database? They all are the advantages of database. We have done this in this one also. See, the full form of DBMS we have done, right? And then flat file relational, database servers. See, the same line is here also, right? And then we have the database advantages. Reducing the data redundancy, then maintaining data integrity, backup and recovery. They all are the advantages of database, right? Data security is there, privacy is there, consistency is there. Okay. Then dash prevents creating multiple copies in the database. Data duplication is not there. What is the another name for data duplication? Data redundancy. So the correct answer is data redundancy. Dash means that the data is accurate and consistent in the database. Now when it comes to accurate and consistent, it is data integrity. All right. Only authorized users are allowed. So that is data security, where you are authenticating yourself
entering the password. Database management system automatically take care of data backup and recovery. Okay. Dash prevents multiple mismatching copies of the same data in the database, and only valid data will be added in the data base. That is data consistency. Okay. There is no mismatch. Dash in a table represent a set of information with same structure in every row. Dash table set of information is a row or tuple record. Okay, so there's yeah, tuple, row, record, they all are one and the same thing. So in case it is written tuple, record, row, and all of the above, so you write all of the above. Dash is a actual text, number, or date that you enter when you are adding data to your database. So these are the values. Okay. The unique field representing that present in the table is called primary key. By default, if the primary key is not defined, that column is known as candidate key. Wait a minute. I think this question is wrong. Okay, so this question. Dash key can store multiple same record in the table. So, dash key can store multiple same records in the table. Again, foreign key. The relationship between two tables where one table has one record and another table has many records is C. One table, one record, another table, many record. One, too many. Okay. SQL stands for Structured Query Language. A dash is a collection of data components organized in form of vertical columns and rows. That is table. Table has rows and columns. A row also called as a record or tuple. Okay. You can create tables in a database using Wizard, SQL, both. We can use Wizard also, we can use SQL, so both A and B. Dash are the building blocks of a database. Table. Table is the basic building block of the database through which you can create, form, report, and queries. Dash are used to define the data type of data that will be stored in the database. So what kind of data you are going to store, that is told by data types. Okay. What are different types of data type available in OpenOffice? Numeric, alphanumeric, binary, date and time, all of the above. All of the above is the answer. Dash type are used for describing numeric values of the field used in the table. So that is numeric. Okay. It is only numeric value. So you will write numeric. If it is containing alphabets and numbers, then you will take alphabets. Boolean means it will give you either true or false or yes or no. Okay. Dash data type can store 0 or 1. 0, 1, that is Boolean. Yes or no. No means 0. False means 0. Yes means 1. True means 1. What are different numerical data types? Boolean, tiny and small int, integer, big int, all of them. All of the above. Dash data type can store UTF-8 characters in the database. That is long varchar, I guess. Both A and B. Okay, they both can store it. Dash is case sensitive data in the database. I think it's long varchar. Varchar ignore case. If you take varchar ignore case, it is going to ignore the case of the data. Okay. Now dash data type is a, let me see over here what they have written for varchar ignore. I don't know where is the data type they have given. Forgot. Okay. Varchar ignore stores the specified length. Comparison are not case sensitive. Seen ignore case means there is no sensitivity with the case of the case, means if you write in capital and or small, that doesn't matter. And this question was there, UTF characters, right? So it is char and varchar both. Varchar can have any specific number of characters. If you are specifying varchar 10, it means maximum 10 or less than 10 characters could be there.
Binary is used for photos, music, files and all. Okay, so let's get back. Yeah, date and time both by timestamp. Okay, table is a collection of data elements that are organized using a vertical column and horizontal row model. Column and row. A dash is a collection of data values of a specific type, one for each row of the table. A collection of data values, so that is column. In a table, see collection of data values. एक ही तरीके की of a specific type. एक ही तरह की values किस में होंगी? जैसे name में सिर्फ name है, date of birth में सिर्फ date है, तो एक specific type का data है, right? That's why it's column. In a table, a dash represents a single data item. A row, the C is tuple, but it is both row and that's right, tuple, row and tuple both in the same. So a row, tuple, record, they all are same. Dash are used to identify which type of data we are going to store in the database. Data type, that is data type. There are dash way to create the table. There are actually 3 to 4 ways. How many ways we have seen? SQL view, design view, wizard. There are 4 views. Now there are 3 views to create the table. That's not correct. Let me show you this. See, when you create the table 1, 2, 3, there are 3 ways to create the table. Okay, let me check if there is any comment or any doubt to anyone. I don't think so. Okay, so let's move ahead. Field properties can be set in both dash and dash. Length and default value, length and entry both, A and B, all of the above. Field properties can be set in both. I don't know what this question is. Actually, this question is not clear. By default, the length of the numerical data type is, I think it's 10. If I'm not wrong, yes, it's 10. Okay. If the user does not specify a value for a field while putting values into the table, a dash value can be assigned to it. A default value. Okay. अगर आपने कुछ नहीं डाला तो एक डिफॉल्ट वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी अगर आपने उसको डिफाइन किया है तो. डैश मीन्स टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सॉर्टिंग, प्लीज फिल्टरिंग मत लिख देना. नॉट अरेंजमेंट, इट्स सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. Then dash is used to maintain accuracy and consistency. Again, referential integrity. In base, data can be linked between 2 or more tables with the help of primary key and foreign key, both A and B. Referential integrity helps to avoid all of the above. देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपने पेरेंट चाइल्ड में एक रिकॉर्ड है और एक उसी से रिलेटेड एक चाइल्ड रिकॉर्ड है, अगर आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो जिससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल में है तो आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड दूसरी टेबल में है. ठीक है. सिमिलरली आप चाइल्ड टेबल में ऐसा रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो जो और उसमें ऐसी वैल्यू डाल रहे हो जो एक दूसरी टेबल से रिलेटेड है और लेट्स से उसमें एम्प्लॉई का नाम आप एक एम्प्लॉई का नंबर डाल रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो आप नहीं डाल सकते. तो ये सब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से अगर आपने उसको ऐड किया है तो आपको एरर जनरेट करेगा ताकि आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकें, कंसिस्टेंसी रहे और इंटीग्रिटी रहे. द कनेक्शन एंड एसोसिएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कनेक्शन एंड एसोसिएशन बिटवीन 2 or more table is known as relationship. ओके आप देखो आपके जो बुक में है ना रिलेशनशिप के बेसिस पे क्वेश्चन है तो आपका आंसर कनेक्टर या कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप है.
Relationship between table has to save time, reduce data entry errors, summarize data, all of the above, all of the above। ये क्वेश्चन भी हमने किया था लास्ट टाइम। मतलब ये टॉपिक देखा था एनसीईआरटी पीडीएफ में। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन विच यू कैन क्रिएट, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ऑल ऑफ देम। In dash relation, both tables must have primary key, that is one to one. Yesterday we have seen this one also. ये देखो, ठीक है बेटा, सेम। Now all these relationship, types of relationship, one to one, both tables must have primary key column, so that is one to one. One to many में क्या होगा बेटा, one of the table must have primary key column, ठीक है। And many to many में there are nothing like there is any primary key. So the next question is, in this relation one of them must have primary key, that is one to many or many to one, right? यही था ना बच्चे। Dash is a standard for commands that define the different structure in the database. A different is a standard for commands that define structure. Structure define करने के लिए आप use करते हो DDL, ठीक है। देखो, structure define definition, इसको relate करो, ठीक है। So definition आएगा इसका, DDL आएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लो। DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन में कौन सा आता है, सिलेक्ट कमांड आती है आपकी, ठीक है। डैश इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा, दैट इज DML। मैनिपुलेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए आप DML कमांड यूज करते हो। एक्सेस करने के लिए कौन सी होती है, सिलेक्ट कमांड होती है। डैश इज अ सबसेट ऑफ DML दैट जस्ट डील्स विद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है। अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज SQL। आप इसने SQL पढ़ा है अपने कोर्स में, तो आंसर आपका SQL होगा। तो थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको वही देखो, मोस्टली वही आपको लेना है जो आपकी बुक में है टर्म्स। डैश आर, देर आर डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल। थ्री हमने पढ़े थे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। देन dash means that the query hides certain data and displays only what you want to see based on the criteria. So that is query में करते हैं हम, but I think that is filtering। फिल्टर में क्या है, जो बहुत सारा डेटा होता है, बट आप कुछ क्राइटेरिया के बेस पे जब डेटा देखते हैं, कुछ कंडीशन के बेसिस पे डेटा आपको मिलता है, तो दैट इज फिल्टर होके मिलता है, फिल्टरिंग होते हैं उसको। डैश स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले जीरो रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो select command, where clause select command। Okay, to retrieve all the columns in the table, the syntax is select asterisk from table। बेटा ये वाला आपका है कमांड, select asterisk from table। asterisk मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सबको आपको एक्सेस करना है। उसके बाद टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल, ठीक है। To display records containing the same type of values, dash clause can be used with the select SQL command। सेम टाइप ऑफ वैल्यूज, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ को अगर आपको, जैसे कि सपोज मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मैनेजर हो, तो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैनेजर, तो आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हो, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी इज F5। टू व्यू द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डेटाबेस, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। नहीं, आपको पहले ही देखो, ऑर्डर बाय तो है, बट उसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर, तो आप ऑर्डर बाय, अच्छा ऑर्डर बाय ही लोगे, क्योंकि इसमें इसने ASC नहीं लिखा। अगर असेंडिंग होता तो ASC लिखता वो, ठीक है। और डिसेंडिंग में DESC होता है। जैसे इसने DECC लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या होगा बेटा, DESC, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डैश स्टेटमेंट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल, तो मॉडिफाई करने के लिए होता है हमारे पास अपडेट। जब देखो मॉडिफाई करना है रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड है। अगर टेबल को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कमांड होती है, ठीक है। रिकॉर्ड्स को चेंज करना है, अगर रिकॉर्ड्स में कुछ वैल्यू चेंज करनी है तो अपडेट कमांड है।
द सिंटेक्स ऑफ अपडेट कमांड इज अपडेट टेबल सेट कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। पहला वाला आपका सही है, ठीक है। ए dash a dash helps the user to systematically store information in the database. A form, wait a minute, a dash helps the user to systematically store information in the database, टेबल आएगा फिर तो फॉर्म ही है, सॉरी। अब फिर से देखो, अ फॉर्म enables यूज टू व्यू एंटर एंड चेंज डेटा। देखो फॉर्म में आप व्यू भी कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो डेटा, और चेंज भी कर सकते हो, तो इसका आंसर फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म रिपोर्ट में आएगा समराइज करके आएगा कुछ, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे है, आएगा भी, मैं रिपोर्ट का तब बताऊंगी। डैश स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस और डेटाबेस व्यू, तो दैट इज सेलेक्ट कमांड। बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आप DESC लिखते हो, ठीक है। डैश स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। अपडेट कमांड, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड। रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड, अगर आपको रिकॉर्ड में रिमूव करने हैं तो आप डिलीट कमांड यूज करोगे, ठीक है। डैश प्रोवाइड यूजर सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस, अगेन फॉर्म आएगा आपका। डैश विल हेल्प यू टू डिस्प्ले समराइज डेटा, देखो समराइज डेटा आया ना, तो ये रिपोर्ट है। To create a form, you need to select dash option and available under database selection. आपका अगर आप देखो फॉर्म बनाना चाहते हो तो फॉर्म ही पे क्लिक करोगे ना, और तो किसी पे क्लिक नहीं करोगे आप। A dash help to collect specific information from the pool of data in the database. कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो क्वेरी के थ्रू आप लेते हो, दैट इज क्वेरी। A dash is used to display summary of data, form नहीं आएगा, query report आएगा, again summary report। dash are the interface with which the user interact, form से user interact करते हैं, ठीक है। data from multiple tables can be stored in database। which data type is suitable for storing the date of birth, बताओ इनमें से कौन सा होगा। टाइम में तो नहीं करोगे ना, आप डेट में ही करोगे। टाइम स्टेप में क्या होता है, डेट और टाइम दोनों आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो उसके लिए आपका आंसर आएगा डेट। उसके बाद आपका आया विच डेटा टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो आप लॉन्ग वेर केयर और या फिर मेमो, ये वाले जो फील्ड होते हैं इनको यूज़ करते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, बाइनरी, डेट एंड टाइम, डेट एंड डे टाइप, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। देखो आपका बाइनरी भी होता है, डे एंड डे नहीं होता, डेट एंड डे नहीं होता, ये आपका ऑड वन आउट है। व्हाट डज अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल रिप्रेजेंट, सिंगल डेटा आइटम attribute, no, rows। okay, which toolbar help us to move from one record to another in the form of a database? Navigation, this I have to look for, navigation toolbar, ठीक है। navigation basically होता है नेविगेशन के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। write the query to increase the salary of all employees by 10,000 in a table with the name employee and the column name is salary। तो आप क्या, आपको क्या करना है, सैलरी सबकी चेंज करनी है, ठीक है। तो यानी कि रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नाम, अपडेट एम्प्लॉय, फिर सेट आएगा, उसके बाद कॉलम का नाम, कॉलम है हमारा सैलरी, और फिर आपको क्या चेंज करना है वो लिखोगे, सैलरी प्लस 10,000। तो ये फर्स्ट वाला आपका सही है, क्यों, ठीक है। ये स्टार स्टार आप नहीं लगाते हो। अपडेट टेबल नहीं आता, अपडेट एम्प्लॉय आएगा, सिंपल। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 10,000, ठीक है। विच क्वेरी विल डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, ये सही है, ठीक है। अगेन फर्स्ट वाला सही है। विच क्लॉज कैन बी यूज विद द सेलेक्ट कमांड, ऑर्डर बाय, वेयर क्लॉज, बोथ कैन बी, देखो दोनों यूज हो सकते हैं, ऑर्डर बाय भी और वेयर क्लॉज भी। जब वेयर होती है कंडीशन देने के लिए, ऑर्डर बाय सॉर्टिंग करने के लिए, जैसे ये वाला था ऑर्डर बाय, ठीक है ना। इन विच रिलेशन नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की, कौन सी टेबल, कौन सा रिलेशनशिप होता है जिसमें किसी भी टेबल में प्राइमरी की कॉलम का होना कोई ज़रूरी नहीं है, दैट इज
मैनी टू मैनी. ठीक है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रेफर्स टू consistency and relationship between the table. Which field property in base must be set to yes in order to require a value to be entered in that field. अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज़र एंट्री करे तो आपको क्या करना होता है, एंट्री रिक्वायर्ड को येस करना पड़ता है. ऑटो वैल्यू में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू एडिट होती रहती है और किससे स्टार्ट होता है, वो जीरो से. ठीक है. लेंथ में आप लेंथ कितने कैरेक्टर्स या कितनी उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स या नंबर डाल सकते हो, वो होता है. फॉर्मेट में जैसे हमने डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि पहले डेट आए या पहले फिर मंथ आए फिर ईयर आए. ठीक है. इन विच व्यू कैन फील्ड प्रॉपर्टीज बी सेट इन बेस. आप कौन से व्यू में फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेट करते हो, डिज़ाइन व्यू में सेट करते हो, डेटा शीट व्यू में सेट नहीं करते. डेटा शीट व्यू में आप डेटा एंटर करते हो या एडिट करते हो. डिज़ाइन व्यू में आप जो टेबल है उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल, प्रोसीजरल. डेटाबेस मॉडल कौन सा नहीं है इनमें से, आई थिंक इट्स प्रोसीजरल. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स RDBMS. ओपन सोर्स ऑरेकल, ओपन ऑफिस है. ठीक है. ओपन सोर्स. What is the purpose of report? Used to display information, systematic way of storing the table data. ये आएगा display information. ठीक है. Purpose of form, store information, not to display. वैसे display भी करता है, both and भी आएगा इसका. Okay, which SQL command will increase the salary of employee by 5,000? फिर से हमें चेंज करना है, 5,000 सबकी सैलरी में ऐड करना है. तो अपडेट कमांड, अपडेट एम्प्लॉय सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 5,000. ये बिल्कुल सही है. फर्स्ट आंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट. अब एसक्यूएल क्वेरी का हमें बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC. तो क्या होगा इसमें, रोल नंबर वाइज सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर फॉलोड बाय रोल नंबर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. DML स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज. SQL is structured query language. Which language is used to extract and fetch data from the table? MySQL. ठीक है. In base, how can data be linked between two or more tables by using primary key and foreign key? Both. In which view can the structure of the table be changed? Design view. Design view में आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो. What data type is auto value property used for? न्यूमरिक. ठीक है. न्यूमेरिक वैल्यू होती है, 0 1 से होता है ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. विच डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक सैलरी, फीस एंड प्राइस. सैलरी, फीस, प्राइस, ये सब क्या है, आपकी जिसमें डेसिबल वैल्यूज आ सकती है, तो आप इसमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप लोगे. ठीक है. इन व्हाट वेज कैन द टेबल बी क्रिएटेड, यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिजाइन व्यू, बोथ ए एंड बी. व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज अ प्राइमरी की, यूनिक डेटा. डज डेटा इंटीग्रिटी मीन्स डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट? यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम? MySQL, राइटर, ओरेकल, ओपन ऑफिस. राइटर, देखो राइटर नहीं होता, आपने राइटर पढ़ा है ना, उसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं. सो राइटर डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है. व्हाट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, कलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कैन एक्ट एज प्राइमरी की? रोल नंबर, फीस, स्टूडेंट नेम, मार्क्स. कौन सा इसमें से बन सकता है प्राइमरी की, बताओ. फीस बन सकती है, फीस तो सबकी सेम होती है. स्टूडेंट नाम, एक में एक जैसे दो बच्चे हो गए, एक जैसे एक नाम के 2 3 बच्चे हो गए तो वो भी नहीं बन सकता. मार्क्स भी नहीं बन सकते, मार्क्स नहीं सेम होते हैं. तो सिर्फ रोल नंबर है जो अलग अलग है सबका, वो कभी भी सेम नहीं होता, इसलिए रोल नंबर आपकी प्राइमरी की बन सकता है. इज ओपन ऑफिस बेस्ड इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? यस. व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द टेबल? टेबल 1. टेबल 1. बी. Which of the following data type will occupy more space in computer memory?
बिग इंट और इंटीजर, बिग इंट। इन विच व्यू कैन डेटा बी एंटर्ड, कौन से व्यू में आप एंटर करते हो डेटा, डेटा शीट व्यू में। कैन रिलेशनशिप इट बी क्रिएटेड बिटवीन डैश टेबल इन डेटाबेस, सिर्फ एक, देखो रिलेशनशिप है तो दो टेबल्स तो चाहिए, दो से ज़्यादा टेबल भी हो सकती हैं, टू और मोर टेबल्स। आर क्वेरीज कमांड दैट आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई द डेटा इन अ टेबल, yes, they are used to, they can be used to modify the data in the table, तो true, ठीक है। which SQL command will retrieve the details of all the student whose favorite color is blue, तो select asterisk from student where fav color is blue, this is correct, ठीक है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मांगे हैं लेकिन where clause लगेगा। by default data is arranged in ascending order in the order by clause, तो ascending आएगा इसका। which of the following is not a SQL command, delete भी होती है, update भी होती है, select भी होती है, create भी होती है, सारी होती हैं, इसने गलत लिखा है, ये सारी आपकी SQL commands हैं। क्रिएट होती है, क्रिएट टेबल से आपकी टेबल बनती है, क्रिएट टेबल, ठीक है। फॉरेन की, अ की दैट कंटेन्स नन वैल्यूज, अ की दैट कैन कंटेन जीरो, अ की दैट रेफरेंस अनदर टेबल्स प्राइमरी की, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। रेफरेंस जहाँ पे आ जाए वो फॉरेन की होती है। विच आर द फॉलोइंग फील्ड प्रॉपर्टीज फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप इन बेस, न्यूमेरिक किस में होगा, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा, ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू, अभी हमने पीछे किया था। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर का तो 10 होता है। वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स बाय सेलेक्टिंग विच ऑप्शन, रिलेशनशिप, टूल्स का, टूल्स रिलेशनशिप, ठीक है। इन विच रिलेशनशिप बोथ टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम 1 to 1, व्हाट आर द कमांड्स दैट आर डिफाइंड that define the data structure and manipulate the data in a table, queries, बहुत सारा है अभी तो गॉड। ओके, विच ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन इन बेस, कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, प्लस माइनस, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। कैन वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज बी यूज टुगेदर इन अ सिंगल क्वेरी, yes, ये can be. What is the purpose of update command? Update command is used to modify the data in the table. First one is true. Which statement is used to remove one or more records in the table? Delete. Can we insert record into table using the form? Yes. Which method is used to create a table step by step? Wizard. ठीक है, आप विजर्ड वाला यूज करोगे। विजर्ड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी होती है कुछ भी काम करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डेट टाइम डेटा टाइप, डेट भी होता है, टाइम स्टैम्प भी होता है, टाइम स्टैम्प होता है, स्टैम्प टाइप नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। बाइनरी डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर इमेज, साउंड, बुलियन, बाइनरी, इमेज, साउंड, इमेज और साउंड दोनों यूज कर सकते हो भाई, दोनों यूज होती हैं। डी बाइनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ओपन ऑफिस डेटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, डेट टाइम भी होता है, बूल की जगह क्या होता है, बुलियन, पूरा लिखा होता है बुलियन, ठीक है, बूल नहीं होता। समराइज डेटा इन डेटाबेस, समराइज आ गया, फिर से रिपोर्ट हो गई। विच डेटाबेस हेल्प फीचर हेल्प यू टू सिस्टमेटिकली स्टोर डेटा इन द टेबल, टेबल्स में आप स्टोर कर सकते हो डेटा, फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। राजेश वांट टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय इंक्रीमेंटिंग इट बाय ट्वाइस, 2 बार इंक्रीमेंट करनी है, तो सेलेक्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम एम्प्लॉय, ये करेक्ट है आपका, ठीक है, डी वाला पार्ट। Which feature is used to collect specific information from pool of data? Query. Which of the following relationship cannot be created in OpenOffice base? कौन सा नहीं कर सकते आप? Many to all. 1 to 1 भी होता है, many to many भी होता है, 1 to many भी होता है, 1 to all नहीं होता, many to all नहीं होता। Which property help to set the value that is automatically inserted? Automatically खुद आ जाए default value, ठीक है। Which field property in base can be used to automatically increment a value? Automatically increment करने के लिए auto value होती है, ठीक है। In which view can data be entered in table? कौन से व्यू में एंटर करते हो, डेटा शीट व्यू। Which of the following is not a component of database management system? Data warehouse, query language, data dictionary, data engine,
दिस आई डू नॉट नो. डेटा वेयर हाउस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइन एस. ये आपका नहीं आएगा, ये रहने दो. ठीक है. विच एलिमेंट इन अ टेबल कंटेन्स डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप. सेम डेटा होगा. अगर नेम है तो नेम है. कॉलम मतलब उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ है. तो वो क्या होता है, कॉलम होता है. कॉलम में सेम डेटा होता है. ठीक है. जैसे आप वो बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, तो पहले लिखते हो ना रोल नंबर देन नेम. तो रोल नंबर में सिर्फ रोल नंबर होते हैं, तो वो क्या है, कॉलम होता है. वर्टिकल क्या है, कॉलम. और हॉरिजॉन्टल क्या है, रो. अ टेबल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज. तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रोज कितनी. कॉलम फिक्स होते हैं लेकिन रोज कितनी भी हो सकती है, रिकॉर्ड्स कितने भी हो सकते हैं. विच आर द फॉलोइंग एक्स एज इंटरफेस टू व्यू एंटर इन चेंज डेटा. ये सारा आप काम किस में करते हो, फॉर्म में करते हो. विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट डेटा. डिलीट करने के लिए आप क्या करते हो, रिमूव, सॉरी डिलीट करते हो आप, सिंपल. विच आर द मोस्ट कॉमन डीएमएल यूज. कॉमन डीएमएल कमांड इज सेलेक्ट कमांड. वैसे तो ये वो सारी ही यूज होती हैं, बट मोस्टली आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हो. विच सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टोरिंग डेटा फॉर स्कूल स्टूडेंट. आप एमएस एक्सेस और इम्प्रेस दोनों ही यूज कर सकते हो भाई. इसके ऑप्शंस थोड़े गलत हैं. What kind of data storage system store the data in single table? Single table, flat file. One file, only file नहीं लिखोगे, flat file लिखोगे. What kind of computer hold the actual database that runs only DBMS, database server? What is the role of database server? Database server backend में होता है, बस इतना ध्यान रखो. Duplication of data is data redundancy. Which of the following is not that advantage? देखो जो डेटाबेस है वो डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं करता है. कैन अ डेटाबेस हैव ओनली वन टेबल. डेटाबेस में सिर्फ एक टेबल नहीं हो सकती, बहुत सारी टेबल होती हैं भाई. अगर सिंगल टेबल होगी तो वो फ्लैट फाइल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड्स. यूनिक रिकॉर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइमरी की. प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉलम. जब दो या तीन कॉलम के साथ आप एक प्राइमरी की बनाते हो तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं. कैन डुप्लीकेट वैल्यूज भी एंटर्ड इन प्राइमरी की, नो, क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज के लिए ही होती है. व्हाट इज द की दैट रेफर टू प्राइमरी की फॉर अनदर टेबल, फॉरेन की. अगेन रेफरेंस प्राइमरी फॉरेन की. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड is required when data is stored, maintained and retrieved from multiple tables. RDBMS. Does every row in a table have same structure? Yes. What are the basic building block of database? All of the above. Table, sorry. What is the default data type or field? Varchar. Varchar होता है डिफॉल्ट. ठीक है. अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो varchar आ जाएगा. Does base automatically add a column as primary key? Yes. What is the default length of varchar? Varchar का default length 50 होता है. What is used to identify the type of data type? Which of the following is not a numerical data type? Varchar. Varchar में आप कैरेक्टर्स डालते हो, बाकी सब में न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो. Which of the following data type cannot store decimal values? तो डेसिमल आप वेट अ मिनट ना. Okay, so which cannot be used for storing decimal values. तो boolean में yes or no आप store करते हो, तो boolean is the correct answer. Which data type is used to store photo, music, binary? Is char fixed length data type and varchar is the variable length data type? Yes. What operation can be performed on data in a table? What operation can be performed on data in a table? सारे कर सकते हो आप. By after inserting record in the table, can the structure of the table be modified? No. नहीं कर सकते आप. हमने कल देखा भी था. तो वो
हैंग मतलब वो उसमें ना तो रिकॉर्ड ऐड हो रहे थे ना चेंज हो रहे थे. What is sorting? Sorting means arranging data in ascending and descending order, both A and B. Referential integrity used to maintain accuracy and data? Yes. From which menu relationship can be created? Tools menu. How many types of relationship are there? 3. In open office space, which view can a query be created? Query आप design view में create कर सकते हो, wizard से भी कर सकते हो, both A and B. Can data be deleted using queries? Yes. Which statement is used to retrieve data from the table? Select command. What is the purpose of SQL query? Select EMP name salary multiply by 3 from employee. इससे क्या होगा, ये एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करेगा और सैलरी उसकी 3 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाएगा. सो डिस्प्लेज एम्प्लॉय नेम एंड 3 टाइम्स द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है. विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई डेटा? अपडेट. डेटा मॉडिफाई करने के लिए अपडेट. विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज कंसिडर्ड एज डीएमएल? डीएमएल में ये सारी कमांड आती हैं. What is another name for tuple? Tuple का another नाम क्या है? Tuple means records. ठीक है. Then which of the element in a table represents single data item? Field. Column. Column, attribute, field ये सारे ही ये एक ही नाम है. तो इसका आंसर होना चाहिए था इसकी जगह all of the above. Which of the following is not a standard SQL data type? Float भी होता है. स्ट्रिंग नहीं होता बेटा, स्ट्रिंग नहीं होता. बूलियन, सॉरी. ओके, कितने रह गए अभी? ओ माय गॉड, 221. लेट्स सी, we'll complete them now. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा नहीं है इसमें? ट्रांसमिशन नहीं होता बेटा. मैनिपुलेशन भी होता है, स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीएमएल? सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट. डीएमएल में अपडेट, इंसर्ट, डिलीट सारे होते हैं भाई. डीएमएल में तो सेलेक्ट कमांड होती है. ये गलत है आंसर इसका. विच ऑफ व्हाट यू कैन डू विद डेटा इन अ टेबल क्रिएटेड इन बेस? यू कैन मॉडिफाई, यू कैन इंसर्ट, यू कैन डिलीट ऑल ऑफ देम. इन विच व्यू कैन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बी चेंज इन बेस? कौन से व्यू में आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो? डिज़ाइन व्यू में. विच व्हील प्रॉपर्टी इन बेस कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट? फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है वो. ठीक है. डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी, एंट्री रिक्वायर्ड. अगर आप एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी देखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें होता है नो. आपको येस करना पड़ता है. ठीक है. अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द कॉलम एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सॉर्ट बटन. ठीक है. When the primary key from one table appears to another, it is foreign key. In which relationship one table must have primary key? Again 1 to 1. Once the relationship applied on the table cannot be removed. Yes, that is true. Okay, then to remove the relationship between table, you have to right click on the relation thread and then select remove option or delete option. I have to see this, I forgot. Delete option. Which of the language is used to write a query? SQL command. ठीक है. Which command is used to retrieve data from the table? Select command. Okay. Can select command statement or command retrieve data from multiple tables? Yes. Rajesh want to display all records on the table student. So select asterisk from student. This is the correct answer. Which clause can be used with select SQL command to display records containing the same type of values? Where clause. Which command are used to add, modify, delete record in a table? Add करने के लिए you will use insert, modify करने के लिए you will use update, and to remove we have delete. So B is the correct answer. By default, in which order the data is arranged? Ascending order. ठीक है. You can write in increasing order. Which clause of the select statement help you display data in a database? Where clause. What is the name of interface in a user specified layout that lets user to view, enter, change? फिर से फॉर्म आ गया इसका आंसर.
Aman created an object x in base to store values in form of rows and column. What is x? x देखो क्या है, rows and columns किस में होते हैं, टेबल में होते हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप फिर से कॉलम. ओपन सोर्स आपका ओपन ऑफिस बेस है. व्हाट इज द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ टाइनी नीड डेटा टाइप, दिस आई हैव टू सी, इज 3. विच डेटा टाइप स्टोर कैरेक्टर डेटा अप टू लेंथ स्पेसिफाइड बाय द यूजर. स्पेसिफाइड बाय द यूजर तो वो कैर होता है, ठीक है. आई डोंट नो. स्पेसिफाइड बाय द यूजर, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लेंथ का चाहिए तो वो कैर ही होता है, वेर कैर नहीं होता. वेर कैर में आप वेरिएबल लेंथ का डालते हो, किसी में 4 डाल दिए, किसी में 10 डाल दिए, इस तरीके से. दीदी वांट टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज द पिक्चर्स. तो आप पिक्चर्स भी स्टोर करने हैं, डिटेल्स भी स्टोर करनी है, तो आप बाइनरी यूज़ करोगे. व्हाट डेटा टाइप स्टोर आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो आप वो टाइम यूज़ करोगे क्योंकि आपको टाइम सेव करना है. सो अभी मैंने एमसीक्यू करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. Okay, so till then, I hope that all this is very clear to you, and you will be very, very prepared for your board exam. And I want you to get full marks in your IT 402 subject. And with this hope, I'm ending this stream. And in the next stream, we are going to discuss the question answers of database management system. Okay. Database. Now I'm ending this stream. Thank you so much, everyone.